JRF November 2017. Which of the following set of statement best represent the nature and objective of teaching? Teaching is like sailing and learning. No. Teaching is social act. Yes. Teaching implies learning where learning does not imply teaching. Can be yes, can be no. But देखते हैं. Teaching is kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it. ये तो बिल्कुल ही गलत है. ठीक है. So teaching is an interaction and is triadic in nature. The learning is an active engagement in subject domain. ये सही है. So here answer will be B, C, E. From the list of the learner characteristic which would facilitate teaching learning system to become effective. Prior experience of learner family lineage is not there. Aptitude of learner stage of development, yes. And learner's food habits, no. And religious affiliation, no. All teaching implies learning is to be useful must be derived from teaching. That's not true. All teaching implies from learning is to be useful must be derived from teaching. That's also not true. On the basis of summative test, a teacher is interpretative his student performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior criteria reference है इसमें summative test किया जाता है. So summative evaluation in the criteria reference testing. So wellness lifestyle evidence of behavior सब देखते हैं. Which one of the following is key behavior of effective teaching? That is instruction variety. अगर वहाँ पे instructions में variety है that means that is the key behavior of the teaching. Which of the following research type focus on ameliorating the prevailing situation? That is action research. A researcher attempt to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. That is ex post facto research. In which of the following arrangement a wider spectrum of idea and issue may be made possible? That is conferences में possible है. If finding a thesis writing format, which of the following is the supplementary pages? That is bibliography and appendix that is in the supplementary pages. Which of the following is the susceptible to the issue of research ethics? That is reporting of the research finding. अगर आप report कर रहे हो that is the susceptible to the issue of research ethics. अब कुछ पैसेज है वो बाद में करेंगे. द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट ए जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ओके. एंड द स्पार्टल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन ए क्लासरूम कैन रिड्यूस स्टूडेंट्स कॉग्निटिव लोड इन अंडरस्टैंडिंग में रिड्यूस करेगा अगर आपने ऑडियो रिप्रोडक्शन किया है. द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी एम्पैथेटिक होना चाहिए. ए गुड कम्युनिकेटर बिगिंस विद प्रेजेंटेशन विद आइस ब्रेकर. गुड कम्युनिकेटर जो होगा वो आइस ब्रेकर होता है. ठीक है. इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज एक्सेप्टिंग रिसेप्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय दैट एस्टेब्लिशिंग ए व्यू पॉइंट. अगर आपने व्यू पॉइंट रखा है दैट इज द रिप्रेजेंटिंग कैन बी इनहेंस्ड बाय दैट. इन द सीरीज ऑफ 1, 6, 15, 28, 45 द नेक्स्ट टर्म विल बी 66. देख लेना 5, 11, 13, 15, 17 ऐसे डिफरेंस है. द नेक्स्ट टर्म ऑफ द ABD, DGK, HMS एंड MTS बी तो नेक्स्ट SBL आएगा. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T S M N O M N O M N O P Q R S. In a certain covalent is coded as B W P D U O F M. The code is elephant will be written. So ये बनाना पड़ेगा. ठीक है. Jay is a friend of Rakesh pointing to a old man. Ajay asked Rakesh who is he. Rakesh said his son is my son's uncle. इसका जो बेटा है वो मेरे बेटे का अंकल है. His son is my son's uncle. इसका बेटा मेरे बेटे का अंकल है. मेरे बेटे का अंकल कौन होगा? फादर खुद होंगे. ठीक है. तो इसका बेटा मेरे बेटे का अंकल है. तो मेरा बेटा उनका अंकल कौन है? फादर का भाई है. और उसका बेटा जो है मेरे बेटे का अंकल है. तो दैट इज काइंड ऑफ अंकल ही होना चाहिए. लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 है सी. फादर आ रहा है इसका आंसर. उसका बेटा मेरे बेटे का अंकल है. हिज सन इज माई सन्स अंकल.